अत्तार तंबुली मनियार सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी नांदेड़ की जानिब से इज्तिमाई शादियों की एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें नांदेड़ व बैरून नांदेड़ के 7 मुस्लिम जोड़े रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। तकरीब का इनेकाद रॉयल गार्डन और फेमस फंक्शन हॉल में अमल में आया। वाज़ेह है कि अत्तार तंबुली मनियार सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी नांदेड़ पिछले कई सालों से बरादरी की माशरती, तालीमी व माशी फलाह व बहबूद के लिए कोशा हैं। इस सिलसिले में कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ और प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आता है, जिनमें अतिय खून कैंप, खतना कैंप, फैमिली काउंसलिंग और इज्तिमाई तकारीबी निकाह शामिल हैं। कमेटी की जानिब से मुनक्किद होने वाली इज्तिमाई शादियों की तकारीब सबसे नुमायाँ सरगर्मी हैं, जिससे बरादरी के कई ख़ानदान मुस्तफ़ीद होते हैं। ATM कमेटी की जानिब से पिछले 5 सालों से इज्तिमाई शादियों की तकारीब का हर साल एहतमाम किया जा रहा है। इस साल तकरीब में मेहमानान खुसूसी के तौर पर मौलाना सआद अब्दुल्ला नदवी और कारी मोहम्मद असद समदी के अलावा अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। इस तकरीब में 7 जोड़े रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। ATM कमेटी के ज़िम्मेदार ने कमेटी की अब तक की सरगर्मियों की रुदात पेश की। मौलाना सआद अब्दुल्ला नदवी व दीगर उलमाए कराम ने अपने खिताबात के ज़रिए हाज़रीन की रहनुमाई की। बयानात के बाद अक़्द की महफिल मुनक़्क़िद हुई। काजी रफ़ीक और हाफिज़ जावेद हुसैन ने ईजाब व कबूल की कार्रवाई अंजाम दी। तमाम मेहमानान के लिए तआम का नज़्म किया गया। तमाम मनकुहा जोड़ों को ATM कमेटी की जानिब से पलंग, बिस्तर, अलमारी, कूलर, बर्तन व दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान तोहफ़े में दिया गया। कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान, अतिया दहिंदगान और रज़ाकारों ने इस तक़रीबी निकाह को कामयाब करवाने के लिए काबिल सताइश खिदमात अंजाम दी। सुरू अल्लाहच्या नावाने करतो, जो असीम दयावान आणि परम कृपावंत आहे। अल्हम्दुलिल्लाह, नांदेड ATM कमिटी म्हणजेच अत्तार तांबोली मनियार एक वेलफेअर सोशल एज्युकेशनल सोसायटी एक सामाजिक संस्था आहे आणि गेल्या मागील 6 वर्षापासून नांदेड जिल्ह्यामध्ये आणि आजूबाजूच्या परिक्षेत्रामध्ये ही सामाजिक संस्था कार्य करत आहे आणि आतापर्यंत या सामाजिक संस्थेने अतिशय उत्कृष्ट आणि महत्त्वपूर्ण सामाजिक उपक्रम राबवलेले आहेत। त्यामध्ये रक्तदान शिबिर, जे रक्ताचा तुटवडा खूप मोठ्या प्रमाणात होत असतानासुद्धा आम्ही दरवर्षी रक्तदान शिबिरे आयोजित करून अखिल मानवांच्या हितासाठी आणि अखिल मानवांच्या जीवनाला उपयोगी असे रक्तदान शिबिरे आयोजित करतो। त्याचसोबत वृक्षारोपण, पर्यावरणाचं संतुलन बिघडू नये म्हणून वृक्षारोपण दरवर्षी घेण्यात येत असते। त्याशिवाय आरोग्यविषयक शिबिरे, जनजागृती असे शिबिरे घेतो। त्याशिवाय विवाह मेळावे आयोजित करून त्याच्यातली जे गरजू आणि होतकरू आहेत अशा दाम्पत्यासाठी हे एक खुलं व्यासपीठ आम्ही निर्माण केलं। यामध्ये आम्ही विवाहिताला म्हणजेच नववधूवराला या दाम्पत्याला ATM कमिटी सोसायटीतर्फे कोणत्याच प्रकारचा त्यांच्याकडून आर्थिक पैसा न घेता सर्व प्रयत्न करून आम्ही त्यांना अलमारी, कपाट आणि पलंग म्हणजे जीवनावश्यक आणि संसारोपयोगी वस्तू देण्याचा प्रयत्न करत असतो। ही संस्था फक्त विवाह सोहळेच घेत नाही, तर मागील 2020मध्ये कोरोना महामारीने पूर्ण जग हैराण आणि परेशान होता। अशा काळामध्ये लोकांना घराच्या बाहेरसुद्धा निघता येत नव्हतं। त्यावेळेस या ATM कमिटीने 1700 कुटुंबांना अन्नधान्य पुरवठा केलेला आहे आणि त्यांना पुनर्वसनासाठी सुद्धा अजून विविध प्रकारचे उपक्रम राबवून त्यांना संधी उपलब्ध करून दिली। आणि 2021मध्ये सुद्धा आपल्या नांदेड जिल्ह्यामध्ये गोदाकाठी वसलेले जे अनेक कुटुंब होते, महापुरामुळे ते सगळ्या कुटुंबाचं अतोनात नुकसान झालं, आर्थिक नुकसान झालं। काही लोकांची घरं पूर्णपणे वाहून गेली, काहीच राहिलं नाही। अशा स्थितीमध्ये ATM कमिटीने प्रत्येक घराचा सर्वे करून जवळपास 900 कुटुंबांना 5,000 ते 10,000 रुपयांपर्यंत त्यांना आर्थिक रक्कम पुरवलेली आहे। आणि मी आज 10 जून 2022 रोजी विवाह मेळावा जो आयोजित केला होता, त्याच्यामध्ये 7 जोडप्यांचं आम्ही लग्न या ठिकाणी पार पाडलं आणि त्यांना मी पूर्ण ATM कमिटीतर्फे त्यांना शुभेच्छा देतो आणि त्यांना अल्लाहकडे प्रार्थना करतो की त्यांच्या भावी जीवन जे आहे ते सुखमय आणि प्रेममय आणि आदरभावयुक्त व्हावे अशी मी त्यांच्या अल्लाहकडे प्रार्थना करतो। या इज्तिमाई शादिया म्हणजेच विवाह मेळाव्याचा मेन जो उद्देश आहे, याचा मुख्य प्रमुख उद्देश हे आहे की जे समाजातील जे गरजू आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आहेत, अशा दुर्बल घटकांमधल्या सर्व मुला-मुलींना त्यांना एक लग्न करून तर देणे आवश्यकच आहे। मात्र समाजामध्ये जे व्याभिचार वाढत आहे ते केवळ हुंडा प्रथेमुळे
आणि आम्ही हुंडा प्रथेला तिलांजली या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मैं इस शादियों का सदर होने के नाते, हमारा प्रोग्राम 7 शादियाँ थी, 7 लड़कियों की, बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ. और मैं हमारे नांदेड़ के जो भी डोनर है, जो हमको इसका मदद किए, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. और हमारे जो जोनल है, सबसे ज़्यादा जोनलों की ज़रूरत पड़ती है हमारे नांदेड़ के. इतना अच्छा काम करे कि हमको ज़रा भी तकलीफ महसूस नहीं हुई, इसलिए हमने इतना प्रोग्राम इतना अच्छे से लिए, इसलिए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. और न्यूज़ चैनल वालों का, हमारे कारपोरेटर का, हमारे उलेमा का, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आकर हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए.